Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all my dear students. Hope all of you are fine and enjoying a healthy stay at your homes. I'm your physics teacher and I welcome you in the class. In this week, we will do chapter 10, Simple Harmonic Motion and Waves. Let's proceed towards solution of numerical problems. First numerical is the time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on the earth? What will be its length on the moon if gm is equals to ge over 6, where ge is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सबसे पहला स्टेप कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का होता है, यू हैव टू मेक द डाटा दैट व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट. अब हमें स्टेटमेंट में दिया गया है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विच इज 2 सेकेंड and we have to calculate the length of the pendulum on the earth and on the moon. अब हमारे पास मून पे अर्थ की निस्बत 6 टाइम ग्रेविटी कम हो जाती है, तो हमें फॉर्मूला दिया जाता है कि जी एम ग्रेविटी ऑन द मून इज जी ई बाय 6, यानी 6 टाइम अर्थ से कम हो गई है. तो पुटिंग द वैल्यू जी ई इज 10, आपको पता है अर्थ पर ग्रेविटी 10 होती है, तो जी एम विल बी 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आगे किसी भी न्यूमेरिकल में gm की वैल्यू अगर हमने यूज़ करनी है तो हम ये 1.62 ही यूज़ करेंगे, बेशक हमें गिवन है या नहीं गिवन. ठीक है. यूजिंग फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ई ओवर जी ई, क्योंकि हमने अर्थ के लिए भी फाइंड आउट करना है और मून के लिए भी, तो पहले अर्थ के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं बाय राइटिंग सबस्क्रिप्ट e फॉर द अर्थ. बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे ताकि एल ई एक साइड पे एलिमिनेट कर सके. वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में एंड वी गेट द आंसर एल ई इज इक्वल्स टू 1.02 मीटर. Exactly on the same pattern again for the length on the moon we use t is equals to 2 pi under root l m. Now हमने n सबस्क्रिप्ट यूज किया है for the moon over g m. अब हमें पता है g m 1.62 है और एल एम हमने एक साइड पे एलिमिनेट कर लिया टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू, and by putting the value in the equation Lm is equals to 0.16 meter. Next, numerical 10.2 and numerical 10.3 will be exactly solved with this formula equation 10.4 and I hope you will do it. Numerical 10.4. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length where g is equals to 10 meter per second square. Again, first step is to make data. Time period is 2 सेकेंड. हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है और g हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिंपली कोई अर्थ कोई मून यहाँ पे नहीं गिवन, तो हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे टाइम पीरियड का. t is equals to 2 pi under root l over g, and by putting the values and eliminating l on one side we get the answer l length of the pendulum is equals to 1.02 meter. Next, numerical 10.5 is if 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. अच्छा, अब चैप्टर 10 के कुछ न्यूमेरिकल्स में विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हम फॉर्मूला बना रहे हैं. अब यहाँ पे हमें गिवन है नंबर ऑफ वेव विच आर 100 एंड टाइम इज 20 सेकेंड्स. अब हमने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड. अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को रिकॉल करें. क्या थी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन? द डेफिनेशन वाज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. तो क्या मैं लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन से फॉर्मूला बना सकती हूँ? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, where number of waves passing through a point is 100 and time which these waves are taking is 20 seconds. So frequency is 5 hertz. Exactly आप इसी से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे. टाइम पीरियड होता है 1/f, तो you will calculate the time period which will become 0.2 second. Third is कि if its wavelength is 6 centimeter, if the wavelength is 6 centimeter,
then calculate its wave speed. We have done with the formula V is equals to F lambda. F is known to us, lambda 6 centimeter is known to us. Putting the values and we get the answer 0.3 meter per second. Here, now numerical 10.6 and numerical 10.7 will be solved exactly by using definitions, making formulas, and main definition, main equation 10.5. Clear? And I hope you will do it. They are very easy. Numerical 10.8. Water waves in a shallow dish are 6 centimeter long. अब जब waves की length की बात आती है तो हम उसको लिखते हैं length of the wave या wave length, which is 6 centimeter. At one point, the water moves up and down at the rate of 4.8 oscillations per second. You have to calculate the speed of the water wave and period of the water wave. First of all, making data. Now, how we will make the data? Length of the wave, which is wavelength 6 centimeter, 0.06 meter. Now, frequency is 4.8 hertz. How? In statement it is given 4.8 oscillations per second, यानी waves per second. तो frequency की definition तो यही होती है ना, number of waves passing through a point in 1 second. So oscillation per second means its frequency. So F is equals to 4.8 hertz. Now part A is we have to calculate the speed of the water wave. Speed आपको पता है, equation V is equals to F lambda से find out की जाती है. हम वही फॉर्मूला लगाएंगे and we get the answer 0.29 meter per second. And in B part we have to calculate the period, and we know that time period is equals to 1 over F. So frequency is 4.8, so time period will be equals to 0.2 second. Clear? Numerical 10.9 will be exactly solved on the pattern as we have done by using equation 10.5, numerical 6 and 7. Now the last numerical 10 is what is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90 megahertz, and 1 mega is equals to 10 raised to power 6, and speed of radio waves is 3 multiplied by 10 raised to power 8 meter per second. Making the data, frequency is given 90 megahertz, it will become 90 multiplied by 10 raised to power 6 hertz. Frequency is given, velocity, speed is given, v is equals to 3 multiplied by 10 raised to power 8 meter per second. For calculating the wavelength, we will use equation 10.5. V is equals to F lambda, and by eliminating lambda on one side to calculate its value, putting the values, we get the answer 3.3 meter. This is all for numericals of chapter 10. Now move towards next chapter. Now we have chapter 11. Let's proceed towards the solution of numerical problems for chapter 11. Now numerical 11.1. A normal conversation involves sound intensities of about 3 multiplied by 10 raised to power minus 6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity? And what is the intensity of the sound for 100 dB? फर्स्ट स्टेप में उन्होंने कहा है कि अगर इंटेंसिटी गिवन है which is 3 multiplied by 10 raised to power minus 6 watt per meter square, then what will be the intensity level in decibel? And if intensity level is 100 decibel, then what will be the intensity of that level? Using the formula of intensity level, which is intensity level is equals to 10 log I over I naught for decibel, क्योंकि decibel हमारा standard unit है. Putting values in it. अब यहाँ पे हमारे पास logarithm involve है. अब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा how to open logarithm, कि अगर logarithm से आगे वैल्यू डिवाइड हो रही है तो वो माइनस में चेंज हो जाती है, और मल्टीप्लाई हो रही है तो वो प्लस में चेंज हो जाती है. आप लोगों को एग्जैक्टली लॉग भी लेना आता होगा. So we get the answer 64.7 dB. Exactly for part B, if intensity level 100 dB is given, then what will be the intensity?
Using again the same equation, intensity level is equals to 10 log I over I naught, and using again mathematical rules for logarithm, changing multiplication into plus, taking logarithm, and in the end to cancel the log we take anti-log, and answer is 0.01 watt per meter square. Numerical 11.2 will be exactly solved in the same pattern using equation 11.5. Next, numerical 3. At a particular temperature, the speed of the sound in air is 330 meter per second. If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound wave, and also tell that is this frequency is in the audible range of the human ear. First of all, make the data. V is equals to 330 meter per second. Lambda is 5 centimeter, 0.05 meter. We have to calculate frequency using again 11.5 equation. V is equals to F lambda. F will be 6600 hertz, which is 6.6 multiplied by 10 is to power 3 hertz. And we know that audible range starts from 20 hertz and ends at 20,000 hertz. So 6600 lies between this range. So we say that yes, this is audible frequency range. Numerical 11.4, again using the definition and formulas from the definition, you will do it by yourself. We have numerical 5. A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 seconds later. Speed of the sound in sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. डाटा हमारे पास क्या है, इको है जो सुनाई दे रही है 1.5 सेकेंड्स के बाद, which is 1.5 seconds, and velocity is 1500 meter per second. We have to calculate the total distance which is in the sea water, position of sea bed. अच्छा, now इको हमारे पास क्या होती है कि आवाज का प्रोड्यूस किए जाना, उस आवाज का टकरा कर वापस हमारे कानों तक आना, दैट इज इको. यानी उसने डबल डिस्टेंस कवर किया है. प्रोड्यूस किया जाना, किसी बिल्डिंग तक टकरा कर फिर वापस उतना ही डिस्टेंस कवर करना. तो जब हमने टाइम फाइंड आउट करना है साउंड वेव्स के नीचे तक जाने का सी बेड में, तो हम इस इको को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने वन साइड का टाइम पीरियड लेना है कि कितने टाइम में हमारी जो साउंड है वो नीचे सी बेड तक गई है. ठीक है. सो t विल बी इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2, which is 0.75 second, and using equation s is equals to vt, putting values in it, we calculate the position depth of the sea, which is 1125 meter. Next, numerical 11.6 and 7 will be solved using 11.5 on the same pattern as we have done numerical number 5. Numerical number 8. The highest frequency sound humans can hear is about 20,000 Hz. What is the wavelength of the sound in the air at this frequency at a room temperature of 20 Celsius? What is the wavelength of lowest sounds we can hear, which is 20 Hz? Assume the speed of the sound in the air at 20 Celsius is 343 meter per second. अब हमें दो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं. हायर फ्रीक्वेंसी लेवल है 20,000 हर्ट्ज और लो फ्रीक्वेंसी लेवल है 20 हर्ट्ज. वेलोसिटी 20 सेल्सियस टेम्परेचर पे सेम है दोनों फ्रीक्वेंसी पे, विच इज 343 मीटर पर सेकेंड. हमने कैलकुलेट करना है कि हायर फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ क्या होगी और लोअर फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ क्या होगी. एग्जैक्टली यूजिंग इक्वेशन 11.5 v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्क्रिप्ट में हम इसको हायर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर लेंगे, हायर वेवलेंथ के लिए, and in the next column for lambda L, lowest wavelength at lowest frequency, where V is the same, which is 343. So we get the answer lambda at highest frequency will be 1.7 multiplied by 10 to the power minus 2 meter, and lambda at lowest frequency is 17.2 meter. Last numerical 11.9. A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर? हमारे पास एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज और वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर. इस फ्रीक्वेंसी की, इस वेवलेंथ की साउंड वेव जो प्रोड्यूस हो रही है
इसको कितना टाइम लगेगा 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में. Frequency is 2 kilohertz, which is 2 multiplied by 10 is to power 3 hertz. Lambda wavelength is 35 centimeter, changing it into meter, which is 0.35 meter, and distance is 1.5 kilometer, which is 1500 meter. First of all, we have f and lambda. We will calculate v, speed of the wave, f lambda, v is equals to f lambda. So v will be 700 meter per second. Using second equation, which is s is equals to vt, to calculate the time in which the wave has covered a distance of 1500 meter. So t is equals to s over v, and the answer is 2.1 second. That's all for numericals of chapter 11. Numericals of these two chapters are very easy. I hope you will understand, and the numericals which I have given you hint, you will do it by yourself, inshallah. Thank you so much, students. Must watch the video that how I solved the numericals, and keep your questions prepared for the NEET class on Wednesday, inshallah.